Hello everyone, मैं TS धाकड़. Now we study high order thinking questions based on current electricity. According to this question, determine the equivalent resistance between point A and B as shown in figure. फिगर के अकॉर्डिंग पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो देखिए ए एंड बी, तो ब्रांच ए बी, above diagram from branch AB as a parallelogram belongs to Wheatstone theory. P upon Q is equal to R upon S. Balance Wheatstone bridge in balancing condition. No charge flow, no current flow through the diagonal side. Useless. So 4 and 4, 8 in series. 4 and 4, 8 in series. 8 and 8, 4 in parallel. 4 and 16, 4 and 16 parallel. 4 and 16, 3.2. Your correct option 3.2. अब देखिए ऑन पेपर, ऑन बोर्ड समझ लीजिए. अब इसको, ये एमओटी था, मेथड ऑफ टेचिंग. दैट्स क्लियर. अब ये डायगोनल साइड तो यूजलेस हो गई बेटा. तो 4 and 4 both are in series. In second branch 4 and 4 are in series. In third branch 16 ohm. That's clear. तो देखिए बेटा, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया 8. दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया 8. 8 8 16 are in parallel. तो रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिप्रोकल चलेगा ना बेटा. 1/8 1/8 1/16. टेकिंग एलसीएम 16, 2 + 2 + 1, R is equal to 16/5. 5 3 15, 2, 3.2 ohm. Okay, thank you.